Good afternoon, everyone. So, yesterday we completed till NDP. Okay, NDP तक हमने complete किया था. तो आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं. And okay, what is okay there? Were you able to record the attendance for global trends lecture yesterday? Because I think so. Roll number 2 was not able to fill up for attendance. So fill up their attendance. So everyone else were able to fill their attendance. Can I get a confirmation? Yes, ma'am. Okay, great. So only one student is left. So I'll add the attendance in it. I wanted to confirm whether no one, anyone else had been left in it. So I'll add her attendance today. Okay, we completed till NDP yesterday, so let's proceed further from NDP. NDP at factor cost. Okay, so that's what we completed yesterday. So today we would be talking about gross domestic product at factor cost. Okay, the first thing that we will be studying is gross domestic product at factor cost. Now, gross domestic product at factor cost is sum total of factor incomes generated within domestic country. See, the same thing again gets repeated. Sum total of factor incomes generated within the domestic territory. Domestic territory of a country along with consumption of fixed capital, along with consumption of fixed capital during an year. So it means that GDP at factor cost is equal to NDP at factor cost plus depreciation. तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं उसे हम लोग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहेंगे. ओके, डेप्रिसिएशन अगर हम लोग निकाल देते हैं तो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बनता है. ओके, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास हम लोग उसमें अपना जो भी डेप्रिसिएशन है उसे ऐड कर देते हैं. दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. The next concept that we would be studying is net national product at factor cost is basically NNP at factor cost. NNP at factor cost is sum total NNP at factor cost is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country
along with of a country along with the income from abroad, along with net income from abroad. So it means that NNP at factor cost is equal to NDP at factor cost plus net factor income from abroad, which can also be written as NDP at factor cost plus exports minus imports. So this is NNP at factor cost. NNP at factor cost basically हमारा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें हम लोग एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे और उसमें से इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे तो हमारा ओवरऑल इनकम जो जनरेट हो रहा है वो निकल के आता है. This NNP at factor cost is basically the national income or the income earned by normal residents of a country. Okay, normal residents of a country जो भी income कमाते हैं उनको हम लोग NNP at factor cost कहेंगे. Factor cost इसलिए because this is basically the income which is generated by the factors during a particular year. एक कोई भी साल है उसमें जितना भी फैक्टर इनकम जनरेट होता है उसे हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की तरह कंसीडर करते हैं. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि फैक्टर के लिए कितना इनकम जनरेट हो रहा है. मार्केट प्राइस जो है वो करंट लेवल पे क्या इनकम है वो हम लोग जानते हैं. फैक्टर कॉस्ट में हम लोग जब वो फैक्टर ने कमाया होगा तब क्या लेवल ऑफ इनकम था वो हम लोग उसमें असेस करते हैं. दिस is what the difference between both of them. नेट में हम लोग डेप्रीसिएशन निकाल देते हैं, ग्रॉस में हम लोग डेप्रीसिएशन ऐड करते हैं. कीप दिस इन माइंड, हमेशा डेप्रीसिएशन जब भी ऐड किया जाएगा, ओके, अगर डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है तो उसका मतलब हम उसे ग्रॉस की तरह कंसिडर करेंगे. अगर डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया इट मींस इट इज अ नेट थिंग. वाई? बिकॉज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हमने वहां पे कंसिडर किया है नेट में. ग्रॉस में हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को कंसिडर नहीं किया. व्हाट वी अज्यूम इज दैट फिक्स्ड कैपिटल जो है उसमें कोई घसारा नहीं होता है. Okay, fixed capital remain constant and there is no depreciation in it. That's what we assume when we say gross concept. जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये हम लोग ये मानते हैं कि depreciation जैसी कोई चीज नहीं होती. But in reality there is a concept known as depreciation and हर asset की productivity कम होती जाती है as and when we are using that particular asset. Then the next concept that we would be talking about is gross national product. Gross national product. Gross national product at factor cost. Gross national product at factor cost, also known as GNP at factor cost. ओके, जीएनपी और एफसी अगर हम लोग ने लिखा है, अगर यहाँ पे भी जीएनपी और एमपी अगर मैंने लिखा है तो वो मार्केट प्राइस है. ओके, अगर मैंने एफसी लिखा है इट मींस इट इज फैक्टर कॉस्ट. जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ, इट इज द सम टोटल of factor incomes earned by normal residents of a country along with the consumption of fixed capital during a year.
एक साल में जितना भी फैक्टर इनकम सारे के सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स कमा सकते हैं, उसे हम लोग जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की तरह कंसिडर करेंगे. GNP at factor cost basically helps us to understand कि overall the entire in a period of the entire year, okay, एक accounting year में जितने भी फैक्टर इनकम हमें मिल रहे हैं, जितने भी लोग हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स है, वो कितना इनकम कमा पाते, उसका दायरा कितना है. ओके, दिस अलाउज अस टू अंडरस्टैंड एज टू अगर हमने ग्रॉस व्हाट यू कॉल नॉट ग्रॉस, अगर हमने डेप्रिसिएशन कंसिडरेशन में नहीं रखा है तो कितना हमारा इनकम जनरेट हुआ है, और हम लोग नेट जब निकालते हैं तो उसमें से जब डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो कितना हमारा डेप्रिसिएशन हमने डिडक्ट किया है. ओके, these concepts helps us to understand कि overall country की क्या position है. At any given point of time, one of the metrics is used in order to understand the level of national income and the growth that takes place over a particular year. I'll try to show you one of the books in which these estimates are given to us every year. हर साल हमारे लिए I'll show you as to how to go and access them. Okay, so it is something which is there in public domain, but we don't know, okay, as to how to go over there. So let me share this tab with you. Okay, new tab. Yeah, it is visible, right? Yeah, it is visible. So I am searching here. I'll search here so that it is appearing to you as well. Let's go to Reserve Bank of India's website. RBI की वेबसाइट पे जब हम लोग जाते हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, so it becomes easier for you to visible, it becomes much more clearly visible to you people. So RBI की वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे. Now RBI is one such aggregator of all of these data. Okay, ये aggregator of data है. वो एक स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी करके एक बुक स्टडी एक पब्लिश करता है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं. The one who is estimating all of these things is basically the Central Statistical Organization. ये वाले estimates बनाता है, but RBI aggregator की तरह काम करता है. चल let's go to annual publications. Annual publication में साल भर का डेटा आपको एक साथ में मिलता है. तो एनुअल पब्लिकेशंस में हम लोग जाते हैं. Here we are able to see the different levels of publications that are given by Reserve Bank of India. So what you are able to see is ये जितने भी डेटा आपको मिलते हैं वो सारा का सारा कहीं ना कहीं पे आरबीआई ने एग्रीगेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में बनाया है. लेट्स सी द हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी. उसमें हम लोग जाते हैं. You are able to see the handbook of statistics on Indian economy 2020-2021 का already issue, वो वाला issue ही अभी तक launch हुआ है. You are able to see this is the current prices, this is the constant prices. Constant prices जो है वो आपका factor cost के ऊपर निकाले जाते हैं, और उसे हम लोग factor cost पे जो हम लोग निकालते हैं, that is your constant prices. So let's open at current prices. या खुशबू मैम सॉरी बाय मिस्टेक. ओके बेटा. सो जब हम लोग ये पब्लिकेशन खोलते हैं देन वी फाइंड द डिफरेंट datas which are available. So let me zoom it out a bit so that the entire data is visible in one place only. Okay, I hope it is visible. Okay, let me zoom in a bit. Okay, starting from 2014 to 2020-21, we have the entire thing which is available. We are able to find gross domestic product, consumption of fixed capital. This is the depreciation that is calculated. Okay, ये depreciation की amount है.
देन वी हैव द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में से ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस हुआ तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आया। दिस इज द ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम जो हमारा है वो है। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, दिस इज द वन दैट इज जिसे हम लोग एनडीपी या जीडीपी या एनडीपी कहते हैं, वो ये दोनों चीजें हैं। उसके अलावा वी हैव द ग्रॉस सेविंग्स, नेट सेविंग्स, ये जो है वो सेविंग लेवल, ओके, दिस इज द सेविंग लेवल, ग्रॉस सेविंग्स और नेट सेविंग। Then we have the gross capital formation. This is the level of investment in a particular economy in different sectors. Okay, different sectors में कितना investment हो रहा है वो हमने यहाँ पे देखा है। और net capital formation is gross capital formation में से depreciation minus हो जाए तो आपका net capital formation निकल के आता है। This is per capita GDP, per capita GNI, per capita net national income, per capita GNDP, DI मतलब कि gross national disposable income. Okay. So in this manner NSO और CSO ये सारे डेटास को कंपाइल करके निकालता है, इट prepares a aggregate report of it, and RBI compiles everything together and issues it as a handbook on statistics of Indian economy. Okay, हर साल ये निकाला जाता है अराउंड इन सितंबर, पिछले साल का हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। So a very authentic source of data, if you want to refer, which is given by Reserve, which is given by the government of India. ज्यादातर लोगों को ये वाला डेटा सोर्स नहीं पता होता है, ओके, व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर रिगार्डिंग दिस थिंग। सो आपके पास ऑथेंटिक डेटा यहाँ पे अवेलेबल रहता है और ऐसे बहुत सारे डेटाज आपके पास अवेलेबल है। 2012 से लेकर 2021 तक यहाँ पे लिखा है। और आर्काइव्स में अगर आप जाओगे तो देन यू कैन फाइंड द डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम 2004 ऑनवर्ड्स। ओके, 2004 ऑनवर्ड्स आपको पूरा 2021 तक पूरा डेटा मिलता है। ऑल ऑफ दीज डेटाज विच आर अवेलेबल आर रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर। ओके, ये आरबीआई जो इश्यू करता है वो ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर के लिए डेटा इश्यू करता है। ओके, बट स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी वाली जो पब्लिकेशन है दैट इज अवेलेबल फॉर द एंटायर इकोनॉमी। ओके, सो इट इज अ वेरी गुड सोर्स, अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा विच इज अवेलेबल, और आप आराम से इसमें से आंखें बंद करके डेटा उठा के कहीं पे भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। दिस इज वन सच सोर्स। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो we will be seeing as to what are the different other sources of information. You can see the different types of information which are available. Comprehensive तरह से बहुत सारा information आपको मिलता है। National income, saving and employment का data, then the major head again is output and prices का data. This is the जो हमारा production जैसे चल रहा है उसके हिसाब से इसका data है। After that we have money and banking के related का data. Then we have the financial market data. After that we have public finance का data, कितना deficit है, कितना हमने cover किया है, कौन से particular source से कितना income generate हुआ है, taxes से कितना हमें मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। Trade and balance of payment का data आपको यहाँ पे मिलेगा कि कौन कौन से हमारे की imports है, की exports है, वो सारी चीजें हमें यहाँ से मिल सकती है। After that we have the करेंसी एंड कॉइनेज, कितने नोट सर्कुलेशन में है, कितने स्मॉल डिपोट्स है, कितने नोट्स उसमें आए, कितने फटे नोट आए, कितने नए नोट इश्यू किए, उसका भी डेटा यहाँ पे आपको मिल जाता है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पॉवर्टी लाइन के बिलो कितने लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन यहाँ पे कैसी है इंडिया में, वो आपको मिल जाता है। क्वार्टरली मंथली सीरीज, यहाँ पे क्वार्टरली एस्टिमेट्स दिए जाते हैं, आपको मंथली एस्टिमेट्स दिए जाते हैं कि सीपीआई कैसे है और डब्ल्यूपीआई कैसा है। सीपीआई इज एन इंडिकेटर फॉर इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इज एन इंडिकेटर ऑफ होलसेल इन्फ्लेशन। ओके, कंज्यूमर इन्फ्लेशन का इंडिकेटर सीपीआई है आपका। तो आपको ये मंथ वाइज आपको डेटा मिल जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम 2004 ऑनवर्ड्स। ओके, 2004 ऑनवर्ड्स आपको पूरा का पूरा डेटा आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। तो अब इन्फ्लेशन कैसे ग्रो हो रहा है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन मनी एंड बैंकिंग के रिलेटेड का डेटा, फाइनेंशियल मार्केट्स के रिलेटेड का डेटा, एक्सटर्नल सेक्टर्स के रिलेटेड का डेटा कि रुपये की पोजीशन क्या थी वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आफ्टर दैट वी गेट सीरीज विद लेस देन मंथली फ्रीक्वेंसी,
दैट इज कमर्शियल पेपर्स कितने इशू हुए, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स कितने इशू हुए, ट्रेजरी बिल्स कितने इशू हुए, everything gets depicted over here. Then we have the growth indices. Overall इंडिया में ग्रोथ कैसे हो रहा है, ओके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, जीडीपी कैसे ग्रो हो रहा है, एनडीपी कैसे ग्रो हो रहा है, सारा डेटा आपको ये वाला जो चीज है मेजर ग्रोथ रेट्स एंड रेशियोज वाला है, ये परसेंटेज फॉर्म में मिलता है। जो हमने पहले सेक्शन में देखा था दैट इज एन एब्सोल्यूट नंबर्स, रुपी टर्म्स में आपको वहां पे मिलता है। सो आई एम शोइंग यू अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी नोट्स रहते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि ये टेबल्स कैसे पढ़ने हैं तो ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स आप रेफर करके पढ़ सकते हो टेबल्स को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल्स इट, ओके ये सेल भी होता है बट ओवरऑल हमारा इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल भी रहता है। इट इज अराउंड आई थिंक सर 250 और 350 रुपीज इफ वी आर गोइंग टू बाई इट। सो इतनी बल्कि बुक आती है इसकी, क्योंकि काफी सारा डेटा इसमें मेंशन किया जाता है, तो इसीलिए दिस इज द ओवरऑल बुक दैट इज अवेलेबल फॉर एज अ हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी 2020-2021। 427 पेजेस है इसमें और आपको ऐसे फॉर्मेट में वो दिया जाता है। ऑथेंटिक डेटा इन अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर आपको यहाँ पे मिल जाता है। it out a bit. ओके तो आपको ऑथेंटिक डेटा पूरा का पूरा ऐसे बुक फॉर्मेट में मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कहीं पे मिलना। नाउ दे हैव इंक्रीज द रेट, ओके 600 रुपीज कर दिया है उन्होंने कंसेशनल विद पोस्टेज। कंसेशनल रेट जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को कंसेशनल रेट पे दिया जाता है। सो इन दिस मैनर अ बुक इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है for the data related to the Indian economy and how it is growing over a period of time. So हम अभी जो इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं उसका पूरा का पूरा डेटा आपको उसी बुक में से मिल जाएगा, अगर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ अगर चेक करना है। anyone is interested they can refer this book. Then comes the private income. The next thing that is included in the national income calculation is known as private income. प्राइवेट इनकम का मतलब है इनकम ऑन अकॉर्डिंग टू सीएसओ, according to CSO, private income is the total of factor income from all sources and current transfers from the government and the rest of world and the rest of world to the private sector. प्राइवेट इनकम में ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है कि भाई गवर्नमेंट ट्रांसफर्स हो गए, फैक्टर इनकम हो गया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से दैट इज अब्रॉड से जितनी भी इनकम मिलने वाली है उसे भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर के इनकम में ऐड कर देते हैं। Now, according to it, the private income is a national concept. It includes corporate tax and corporate savings as well. Okay, इसमें प्राइवेट इनकम को हम लोग कैसे इंक्लूड करते हैं, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम कंट्री एंड अब्रॉड प्लस
गवर्नमेंट ट्रांसफर्स प्लस नेट, ओके यहाँ पे नेट गवर्नमेंट ट्रांसफर्स प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब है फैक्टर इनकम अर्न्ड इन अ कंट्री मींस व्हाटएवर सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड बाय द फैक्टर्स इन इंडिया दैट वुड बी कंसीडर्ड। देन उसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट ने ट्रांसफर्स करने हैं वो दैट इज income which is coming from the government would be included, as well as taxes which have been paid by the people to the government would be deducted. Okay, टैक्सेस को हम लोग डिडक्ट करेंगे और इनकम जो हमने गवर्नमेंट से हमें जो सब्सिडी मिल रही है या कुछ मिल रहा है उसे हम लोग उसमें ऐड करेंगे. ओके, एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, व्हाटएवर वुड बी द नेट वुड बी एडेड इन इट. दैट इज द प्राइवेट इनकम डेफिनेशन. प्राइवेट इनकम जो है वो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें और इंक्लूड की जाती है. व्हाट हैज टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट द corporate taxes and corporate savings are included. ओके, ये दो चीजें इंक्लूड की जाती है यहाँ पे प्राइवेट इनकम के केस में. देन कम्स द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज नोन एज पर्सनल इनकम. ओके, पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम के केस में पर्सनल इनकम इज एक्चुअली द इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स. ओके, it is income received by the individuals income received by individuals from individuals and households from all sources of income in form of factor income. फैक्टर इनकम की तरह जितना भी इनकम हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स कमाते हैं उसे हम लोग पर्सनल इनकम की तरह कंसिडर करते हैं. इट इंक्लूड्स करंट ट्रांसफर्स एज वेल. ओके, करंट ट्रांसफर्स का मतलब है इंक्लूडिंग करंट ट्रांसफर्स. Current transfers means the subsidies that the households are supposed to get from the governments. Okay, government के पास से जो भी subsidies मिलती है उसे हम लोग individuals को subsidies मिलती है उसे हम लोग यहाँ पे include करते हैं. Now personal income is equal to first and foremost उसकी हम लोग formula लिख देते हैं. Personal income is equal to private income plus undistributed profits or corporate saving minus corporate taxes. ओके, यहाँ पे जो हमने लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, गवर्नमेंट नेट गवर्नमेंट ट्रांसफर्स एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम द कंट्री एंड अब्रॉड है यहाँ पे हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी प्लस किया है, कॉर्पोरेट सेविंग्स को भी इंक्लूड किया है. हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेस को माइनस नहीं किया है. वी हैव नॉट कंसिडर्ड इट एज अ एक्सपेंस टू द पर्टिकुलर हाउस होल्ड और इंडिविजुअल विच इज गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर थिंग. In case of personal income, we have taken corporate taxes as an expense and corporate savings as a addition to the particular income. Private income में corporate savings को हम लोग add करेंगे और corporate taxes को minus करेंगे तो हमारा आपका personal income निकल के आता है. Personal income is basically the income which is owned by that particular factor in a particular year.
सो लैंड में से कितना इनकम जनरेट हुआ है वो हम लोग वहां पे इंक्लूड करेंगे. Then after, by investing something, what income has been generated would be considered as an interest income. In the same manner, अगर किसी ने कोई सैलरीड वर्क किया है तो सैलरी में से या फिर वेजेस में से जितना इनकम अर्न किया है ओवरऑल द एंटायर नेशन, वो आप वहां पे कंसिडर करेंगे, तो वो आपका पर्सनल इनकम गिना जाएगा. इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम. ओके, disposable income is the next concept that is going to be discussed. Disposable income. Okay, disposable income का मतलब है personal disposable income is basically the income which is left with the household to spend after deduction of taxes, So disposable income, that is personal disposable income, personal disposable income is equal to personal income minus personal taxes. तो आपने अगर सैलरी कमाई है, उसके अलावा इफ यू हैव अर्न्ड मनी फ्रॉम एज अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर आप ओवरऑल फैमिली की इनकम की बात करें कि फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स आर अर्निंग सैलरी, योर ब्रदर और सिस्टर इज डूइंग अ बिजनेस, तो वहां से प्रॉफिट जनरेट होता है. Then you are getting a scholarship which is a government subsidy which is given to you, or government grant which is given to you. If all of these things are taken into account, और उसमें से आपके जो पेरेंट्स है और आपके जो सिबलिंग्स है, उन्होंने जो अगर प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर उन्होंने अगर कोई टैक्सेस भरे हैं, तो वो टैक्सेस जब माइनस कर दिए जाते हैं तो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल के आता है. दिस इज द इनकम दैट यू वुड बी स्पेंडिंग. ओके, ये इनकम को आप आराम से स्पेंड आउट कर सकते हो, आप आराम से खर्च कर सकते हो. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की जब हम लोग सारे जितने भी लोग हैं, the entire population of the country, if we are taking that into account, then it is known as a national disposable income. इंडिविजुअल अगर है तो उसे हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं. ओवरऑल नेशन वाइड अगर हम लोग देखते हैं तो उसे हम लोग नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, कि कितना एक पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी सिटीजन्स है या फिर जितने भी रेसिडेंट्स है, वो कितना एक साल में खर्च करने जितना इनकम अर्न करते हैं. ओके, over a period of time in every aspect that we have discussed so far, India has seen growth. Okay, इंडिया में इन सभी एस्पेक्ट्स में हमें ग्रोथ देखा गया, विच इज अ गुड थिंग, विच मींस दैट वी आर डेवलपिंग एट अ वेरी गुड पेस. ओके, हमारी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं. ड्यू टू दिस व्हाट हैज हैपेंड इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी से रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ गए हैं. Okay, when we move towards becoming a rapidly developing economy, it would mean that हमारी जो डेवलपमेंट की पेस है वो बहुत अच्छी. The pace of development of a particular country is very good. जो हमने जो एस्टिमेट्स देखे हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किए हैं, वो जब हम लोग एस्टिमेट्स देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन अ ग्रोथ. I will show you one small example of it. If I am able to find it, I'll show you as to how we are able to assess the growth. Okay, just give me 2 minutes. I'll locate as to where that particular file is.
ओके, ये मेरी थीसिस है तो इसीलिए आपको हमारा कोई कॉपीराइट इशू नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस थिंग. सो जस्ट गिव मी 1 मिनट. व्हाई आई एम शोइंग यू, बिकॉज असेसमेंट ऐसे किया जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए. दिस इज बेटर. सो what we are seeing here is that we are trying to find out as to what is the savings level, sector wise domestic savings of the various sectors of the economy. हम लोग देख रहे हैं financial savings of household, physical savings of household, household sector savings, private corporate sector and public corporate sector. हम लोग यहाँ पे जो है these are the this is the data which has been taken from the same source that I showed you. दैट इज आरबीआई की हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन इकोनॉमी के ऊपर से ही ये वाला डेटा लिया है. बट द ओनली थिंग, द ओनली डिफरेंस इज कि हमने जो है सिर्फ और सिर्फ 5 साल के डिफरेंस में लिया है, रादर देन टेकिंग द एंटायर पीरियड इनटू अकाउंट फ्रॉम 1951 to 2015. What I have done is that I have taken it for every 5 years interval. हर 5 साल के इंटरवल के लिए ये वाला डेटा लिया है. So what we are able to see is that financial sector, financial savings of household जो है वो जो पहले 1951-52 में थी, अब आगे जाके 0.14 था. 2014-15 तक आते आते ये has this has become 9,192. Okay, 9,192 billion rupees. Okay, it's not normal rupees. 9,000 rupees नहीं है, 9,000 billion rupees है. तो वैसे ही हर जगह पे आपने इंक्रीज देखा है, हर जगह पे आपने ग्रोथ देखा है. Let's see if we are able to see, we would get a much more clear idea when we see the table. Okay, this is sector wise composition of household sectors. Household sector की हमने यहाँ पे ग्रोथ देखी है 1965, 51, 52 में यहाँ पे ही था. फिजिकल सेविंग्स 65, 66 तक आते आते इतना ऊपर चला गया. ओके, सो इन दिस मैनर you are able to understand कि growth कैसे हुआ है. Okay, how did the economy grow over a period of time? You would be able to understand कि growth की pace इंडिया की बढ़ी है. Okay, that's the reason why national income accounting किया जाता है कि अभी की position क्या है, पिछले सालों के मुकाबले में अभी की पोजीशन क्या है, वो हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर सकते हैं. What you would find very interesting in this data is that every ईयर ऑन ईयर जब हम लोग देखते हैं कि हर साल जो है वो सेविंग्स हाउस होल्ड की हमेशा बढ़ती की. द ब्लू वन इज द हाउस होल्ड सेविंग्स दैट इज देयर. ओके, बाकी जो रेड वाला है वो कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग्स है, और ग्रीन वाला जो है दैट इज योर पब्लिक सेक्टर सेविंग, दैट इज गवर्नमेंटल सेविंग्स. ओके, गवर्नमेंटल सेविंग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो भी हो गया था, नेगेटिव भी चला गया. Okay, this is again the household sector saving. Because my topic was related to households, so I have given much more weightage to households rather than other sectors. Okay, so ऐसे आप यहाँ पे assessment कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए आप हाउस सेक्टर की सेविंग बहुत ही ज्यादा बढ़ी है, बट जो हमारा पब्लिक सेक्टर की सेविंग है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गई. यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे यहाँ पे नेगेटिव भी हो गई है एक पॉइंट ऑफ टाइम. सो सेविंग्स पर हाउस होल्ड ऐसी चीजें हम लोग ये वाले डेटा से आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं. दिस अलाउज यू टू अंडरस्टैंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंट्री में सेविंग्स कैसे ग्रो हुई. दिस इज द डिपिक्शन ऑफ हाउ द सेविंग्स हैव ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द कंट्री. ये कर्व जो इंडिकेट करता है कि भाई ऊपर 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 होते ही गया है. Like this it has increased exponentially. Okay, so this is the way in which you are finding out कि भाई savings ऐसे बढ़ रही है country की. What you find here is from starting from 1999 2000 onwards, यहाँ पे steep increase हुआ है savings में. So savings में increase हुआ है, it means that income में भी increase हुआ है. Okay, this is I have taken the date of saving because मेरा टॉपिक ही सेविंग के ऊपर था, तो मैंने सिर्फ सेविंग्स कंसिडर किया. अगर हम लोग जीडीपी का प्लॉट करेंगे तो वो भी ऐसे ही प्लॉट होगा, वहां पे भी आपको स्टीप इंक्रीज ही दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी या एनडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपकी फैक्टर इनकम्स भी बढ़ती जाती है. So in this way the data is used by various researchers in order to do the research work that they do. Coming back to our topic, we would be now studying the difference between NDP at
फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, कुछ डिफरेंस बिटवीन है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज difference between are asked as very good scoring questions in the examinations। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट अलग अलग से पढ़े हैं, अभी हम लोग एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, तब हमारे दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि ओके ये ऐसे मेजर किया जाता है, इसमें ये एस्पेक्ट्स है, इसमें ये एस्पेक्ट्स है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि तफावत तो समझने के लिए आपको डिफरेंस समझना जरूरी है, मेजरमेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। Let's write down difference between NDP at factor cost and NNP at factor cost. NDP at factor cost is also known as domestic income. Okay. And NNP at factor cost can be known as national income. I'll tell you the reason why इसको domestic income और national income कहा गया है। NDP at factor cost में हमने income from abroad नहीं include किया है। Income from abroad is not included in NDP at factor cost, whereas in NNP at factor cost income, net income from abroad को हमने include किया है, इसीलिए हम उसे national income कहते हैं। NDP at factor cost को हम लोग domestic income कहते हैं। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि हमने NNP में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड किया है, NDP में हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं इंक्लूड किया है। ओके, डेप्रिसिएशन दोनों में नहीं है, बट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनडीपी में नहीं इंक्लूड किया जाता है, एनएनपी में उसे इंक्लूड किया जाता है, इसलिए उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन एनडीपी at factor cost or NNP at factor cost. The first difference is that NDP at factor cost में sum total, it is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country no matter who generates the income, no matter who generates the income, that is income of residents and non-residents are included। दोनों की इनकम को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देते कि रेसिडेंट ने भले ही इंडिया में रेसिडेंट ने इंडिया में इनकम कमाया उसे इंक्लूड कर दो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में, नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में फैक्ट इनकम कमाया है उसको इंक्लूड कर दो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। Why? Because उसने इंडिया में इनकम कमाया है, so he is going to pay the taxes in India, so it is going to be considered an NDP at factor cost. Is it clear? On the other hand, when we are taking NNP at factor cost, it is the sum total of factor income, sum total of, ये डिफरेंस बिटवीन करेंगे, उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे, मंडे फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इट इज द सम टोटल ऑफ factor incomes that is generated by residents of a country no matter
where the income is generated, where the income is generated. So it includes India and abroad. Okay, इंडिया की इनकम तो इंक्लूड होगी ही, अब्रॉड में भी किसी रेसिडेंट ने अगर इनकम कमाया है तो उसे हम लोग इंक्लूड कर देंगे. व्हाई? बिकॉज ही इज गोइंग टू पे टैक्सेस इनसाइड इंडिया. ओके, कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कहाँ पे आपको निकल के दिखा जाता है, देखने को मिलता है. सी, generated within domestic territory, first point of difference. Okay, factor income, who is generating this factor income? Generated by residents of a country. Okay, of a country. Okay, no matter where the income is generated. यहाँ पे लोकेशनल कोई लोकेशनल कंडीशन नहीं है. इनकम कहाँ पे कमाया जा रहा है उससे कोई हमें लेना देना नहीं है. रेसिडेंट है, उसने इनकम कमाया है, it would be included in NNP at factor cost. Okay, a resident or a non-resident owns income inside the national territory, it would be included in NDP at factor cost. Okay. The next point of difference between both of these things, net income from abroad is not included. Okay, income from abroad is not included, whereas in case of NNP at factor cost, in net income from abroad is included. Okay, so this is how NDP and NNP at factor cost are different from each other. NDP at factor cost से फर्क नहीं पड़ता है कि रेसिडेंट ने इनकम कमाया, नॉन रेसिडेंट ने इनकम कमाया. टेरिटरी में कमाया है उसे डाल दो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में. NNP at फैक्टर कॉस्ट में रेसिडेंट में इंडिया में कमाया, रेसिडेंट ने इंडिया में कमाया है या बाहर कमाया, फर्क नहीं पड़ता, डाल दो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में. सो दैट इज व्हाट दिस डिफरेंस इज ऑल अबाउट. ये वाले डिफरेंस बिटवीन आपको ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें आराम से धीरे से लिख रहे हैं सारी चीजें. ओके, गिव मी 2 minutes. I am sharing the password in the chat box so that you can fill in your attendance.